नमस्कार, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे, फिजिक्स डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और आज मैं अपने लेजर्स के ऊपर में लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं। और मैं आप सबका अपने इस लेजर लेक्चर सीरीज के 9th लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कोलिजन लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म। पिछली बार हम लोगों ने नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म की बात की थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलिजन लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म पर, और अगले वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे डॉपलर लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म पर। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसा हमने पिछली बार आपको बताया था कि लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म बेसिकली हम दो कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं, होमोजेनस लाइन ब्रॉडनिंग और इनहोमोजेनस लाइन ब्रॉडनिंग। जो पिछली क्लास में हमने आपसे बात की थी नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग, और आज जो बात करने जा रहा हूं कोलिजन लाइन ब्रॉडनिंग, ये दोनों होमोजेनस लाइन ब्रॉडनिंग की कैटेगरी में आता है। और इन होमोजेनस लाइन ब्रॉडनिंग की कैटेगरी में डॉपलर लाइन ब्रॉडनिंग होता है। तो ये जो लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म है, ये वेरियस फैक्टर्स के कारण जो होता है, इन सब लाइन ब्रॉडनिंग्स को हम लोग उनके लाइन शेप फंक्शन के रूप में हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग में हम लोगों को लॉरेंजियन फंक्शन मिला था। इस बार हम देखते हैं कि कोलिजन लाइन ब्रॉडनिंग में कौन सा लाइन शेप फंक्शन हमें अंत में मिलता है। पिछली बार मैंने थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया, तो एक रिकैप ले लिया जाए कि इनहोमोजेनस लाइन ब्रॉडनिंग, जैसे हम लोगों ने अगर बात किया तो इनहोमोजेनस लाइन ब्रॉडनिंग क्या है? इफ डिफरेंट light emitters in a gas have different spectra, that is they have their own different central frequencies and or line width। यानी आप यहां देखें, ये इनहोमोजेनस लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म है। हर एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम का जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है, और ओवरऑल जो सारे का जो हम एनवेलप अगर ले लें तो ये रिप्रेजेंट करेगा ओवरऑल स्पेक्ट्रम ऑफ अ गैस सिस्टम। यानी इनहोमोजेनस लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म में हर एटम का जो सराउंडिंग होता है या ग्रुप्स ऑफ एटम्स का जो सराउंडिंग होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए सभी का एमिशन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है, इसलिए ओवरऑल स्पेक्ट्रम भी हमारा ब्रॉडनिंग इस कारण से इस हमारा इन सभी के सेंट्रल फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके बनता है। जबकि जैसा पिछले क्लास में हमने डिटेल्स में बताया था कि होमोजेनस लाइन ब्रॉडनिंग में हर एक एटम के का जो सराउंडिंग होता है वो सिमिलर होता है, और सिमिलर होने के कारण उन सब का जो एमिशन स्पेक्ट्रम का सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम होता है, और जिसके कारण कि हमारा ओवरऑल जो हमारा स्पेक्ट्रम का जो फ्रीक्वेंसी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होता है वो इंडिविजुअल एटम्स के सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। तो दैट इज होमोजेनस लाइन ब्रॉडनिंग। ये इनहोमोजेनस लाइन ब्रॉडनिंग है, और होमोजेनस लाइन ब्रॉडनिंग कैटेगरी में आज हम लोग कोलिजन लाइन ब्रॉडनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। कोलिजन या इसी का दूसरा नाम है प्रेशर broadening mechanism. Now, collision between atoms or molecules reduce the lifetime of upper energy level delta T, thereby increasing the uncertainty in E। तो याद होगा कि uncertainty principle है delta E delta T is greater than equal to H cross। So, अगर collision के कारण दो मॉलिक्यूल या दो एटम के बीच में अगर collision होता है तो उसके कारण एक सर्टेन लाइफ टाइम का जो कोलिजन उनका होता है, तो इसके कारण हमारे ई में विड्थ आ जाएगा, यानी डेल्टा ई में हमारा डेल्टा एक विड्थ बन जाएगा, जिसके कारण डेल्टा ओमेगा भी बन जाएगा, और उसके कारण हमें जो लेजर लाइट मिलेगा वो मोनोक्रोमेटिक नहीं मिलेगा, उसमें कुछ लाइन विड्थ होगी। This effect depends on both the density and the temperature। यानी गौर करिए, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, या हम टेम्परेचर भी इंक्रीज करते हैं तो गैस के एटम्स के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में इंक्रीज करेगा, जिसके कारण रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, और रेट ऑफ कोलिजन बढ़ने से डेल्टा ई हमारा बढ़ेगा। Now, this broadening effect is described by Lorentzian profile in most cases, जो कि हम बाद में चल करके देखेंगे। Now, the random phase jumps due to collisions cause a wave to lose phase information। Actually, just before the collision, let us say the two atoms far apart were radiating, let us say sinusoidal waves, and just when the two atoms come closer together and make a collision, during the collision time,
they lose their earlier sinusoidal nature, and during this time there is a random change in the phase, and therefore the emission radiation during the time of collision is different from the what it was earlier before the collision and what it will be now after the collision. So these random phase jumps can occur for electron wave functions commonly due to elastic collisions with other atoms or lattice vibrations in the case of solid state materials. The random phase jumps will introduce additional frequency components and therefore broaden the spectrum of the electron's wave function. This broadening can be significant, especially at high temperature in certain materials. Now, let us consider a collision between two gas atoms. जब ये दोनों एटम एक दूसरे से दूर रहते हैं, when they are far apart, तो उनका जो एनर्जी लेवल्स है वो एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं होता है, अनपर्टर्ब्ड होता है और उनके रेडिएशन प्योरली साइनसॉइडल होते हैं. जैसे जैसे ये एटम नजदीक आते हैं उनके एनर्जी लेवल्स का ओवरलैप होता है, उनके एनर्जी लेवल्स परटर्ब होते हैं और उनका जो फ्रीक्वेंसी एमिशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करता है ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम. और करिएगा ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम, before the collision time and after the collision time, the emission spectrum is purely sinusoidal as presumed earlier. But it is only that during the collision time, the frequency spectrum does have a change because of random phase changes. After the collision, the frequency returns to its original value. So let us say tau c is the time between collisions and delta tau c is equal to the actual collision time, that is the actual time in which the two atoms are close together in contact with each other. So delta tau, that is collision time, may be written as interatomic distance divided by average thermal velocity, and interatomic distance, if we take approximately to be 1 angstrom and average thermal velocity to be 500 meters per second, it will come out to be 2 into 10 to the power of minus 13 second approximately, of course. Now tau c, that is the time between collisions, and mind it, this tau c that we are talking about, time between collisions, that will be different for different collisions, because when two atoms are making collision, then there are large number of atoms and all the atoms will have their free time before collision that will be different for all these atoms. So we will generally talk about an average time between collision, that is the average time spent by atoms between collisions. So here tau c is the time between collisions, and that can be written as mean free path divided by 500 meters per second. And if you put the value of mean free path, then this will come out to be approximately 10 to the power of minus 6 second. So you just make a comparison. The duration of collision, that is delta tau, is 2 into 10 to the power of minus 13 second, and the time between collisions, that is approximately 10 to the power of minus 6 second, then this time between collisions is much larger than the collision time, the short collision time. Thus, हम लोग ये मान सकते हैं कि the process of collision जो है वो अचानक है और instantaneous है. So the process of collision may be approximated as instantaneous because it is of the collision time is of the order of 10 to the power of minus 13 seconds, whereas the time between collisions is 10 to the power of the order of 10 to the power of minus 6 seconds. Now, as delta tau c is random, the phase of the wave during the collision is arbitrary compared to the phase before the collision. Thus, each phase may be considered to lead to random phase changes, as you can see in the figure. You can see that here we have one collision and here we have the second collision, and this tau c is the time between two collisions. In between the two collisions, the emission spectrum is sinusoidal. Here also between the two collisions, this emission spectrum is sinusoidal, but this time is different from this time, and that will be different from some other collision time. More so, what we can see, at the time of, just before the time of collision, we have sinusoidal. Just after the time of collision, we have sinusoidal, but during this collision, there is a random sudden change in the phase, and that will lead to an emission spectrum having a different frequency width. So from this figure we can understand that it is during the collision time
that a different frequency emission spectrum is there that broadens the original sinusoidal wave like this or this. So naturally, what we have seen in the figure, this overall is no more a sinusoidal emission. This broadening is what we call the collision broadening. So let us see the mathematics of this one. The field associated with the wave shown in the figure may be written as E as a function of time is equal to E naught, e to the power of I omega naught t plus phi. Now mind it, phi accounts for the random phase change during the collision time. Omega naught is the central frequency. So this phase phi, that will remain constant for the time duration when there is no collision. That is t lying between t naught and t naught plus tau c. During this time period, this phi phase will remain constant. And at each collision, phi will change abruptly and randomly. This electric field function is a function of time, but we need the frequency spectrum of this field function. So this can be done by taking the Fourier transform like E omega is equal to 1 by twice pi, taking integral from t naught to t naught plus tau c, E naught e to the power of I omega naught t plus phi into e to the power of I omega t into dt. So if we take out the integral, this will give us E omega is equal to 1 by 2 pi E naught e to the power of I omega naught minus omega into t naught plus phi into e to the power of I omega naught minus omega tau c minus 1 by I omega naught minus omega. And if we have to take the power spectrum, that power spectrum will be proportional to a square of this E omega. So I omega is proportional to E omega mod whole square, and this can be written as E naught by pi whole square sine square omega minus omega naught tau c by 2 by omega minus omega naught square. So this is the power spectrum that we arrive at because of the collisions. Now one point that is very, very important to be considered is here, that during the duration of collision, that is the d tau c, not all the atoms are making collisions. Therefore, contribution to the broadening will be only because of those atoms which are actually making collision. And for the rest of the atoms, the emission spectrum will remain pure sinusoidal. So we need to take into account the probability of for an atom to make collision during that time interval d tau c. So in order to obtain power spectrum, we should multiply I omega by probability p tau c d tau c and integrate it from 0 to infinity. What is p tau c d tau c? P tau c d tau c is the probability that the atom suffers a collision in the time interval between tau c and tau c plus d tau c. And this p tau c d tau c is written as 1 by tau naught e to the power of minus tau c by tau naught d tau c. Here tau naught is the mean life time between two collisions. And because it should be normalized, therefore integral 0 to infinity p tau c d tau c is equal to 1. Any probability function and integrated from 0 to infinity is certainly 1. And the mean lifetime between two collisions can be obtained from this expression like integral 0 to infinity tau c p tau c d tau c is equal to tau naught. And therefore, the line shape function for collision broadening can now be written as that we had the power spectrum. So we have g omega is proportional to 0 to infinity integral I omega p tau c d tau c. And if we take out the integral, then the final expression g omega will come out to be E naught by pi whole square into half into 1 by omega minus omega naught whole square plus 1 by tau naught square. And certainly, if we make comparison with the function depicted in the last lecture, then this function is certainly a Lorentzian function. So the line shape function for a collision broadening mechanism comes out to be a Lorentzian line shape function. The normalized line shape function for the collision broadening will therefore be g omega d omega is equal to tau naught by pi
into 1 by 1 plus omega minus omega naught square into tau naught square d tau, and FWHM can be written as delta omega is equal to 2 upon tau naught. So thank you very much for your kind attention. I hope you have understood the two line broadening mechanisms, that is the natural line broadening mechanism and the collision line broadening mechanism, and both fall into the same category of homogeneous line broadening mechanism, and the line step function for both the broadening mechanisms is Lorentzian. So thank you very much for your kind attention once again.